Hi friends, this is EL4501 Unit 3 IC Fabrication by Dr. M.R. Gadhvi. We have seen in the previous lecture that there are several basic processes for fabrication of a monolithic IC, and uh, here are the list of the basic processes. If you look at the very first 7 processes which are repeatedly repeat for the process of a single component or for many components, like silicon wafer preparation is the basic process. Once the process will able to get the basic disk or a silicon chip for the IC fabrication, but the epitaxial growth, oxidation process, photolithography, diffusion process, ion implantations, isolation techniques. These are from epitaxial to isolation techniques. These are the processes which are repeatedly repeat for a single component or for a many component during the entire process of the IC fabrication. Once the IC get ready on a chip, then the next two processes, last two processes, that is a metallization and the assembly processing and the packaging, these are the process will start later on. And once this two process get finished, that is metallization, assembling and the packaging, the IC is get ready to sell in the market. So this is a hierarchy of the processes in the wafer preparation to assembly processing and the packaging for the monolithic IC fabrication. Let's start with the silicon wafer preparation in detail. Now this is a silicon cylinder which is available uh, for the further processes of any IC preparation. So we will start how exactly this cylinder will be fabricated very firstly, and therefore here it is the methodology which is known as a uh, Zochalski crystal growth method. And if you look at the spelling, it's just like a Czechoslovakia. C is a silent and the spelling will start with the C, but C is a silent. So Zochalski crystal growth method, which is very well known method, because with the help of this Zochalski crystal method or the crystal growth technique, we are we are capable to make such a very long crystal, maybe up to a 1 meter. Well, it is also depend on your size of your silicon ingot or seed crystal cylinder of the Zochalski unit. And in this unit, what we have seen, this is a furnace which is made up of a quartz crucible, or it is also quartz furnace, and where the temperature can go up to the within the furnace. This is a crucible where you are going to take the very pure, almost 99% pure silicon seeds, and which is going to be molten up, which is going to be melt around a 1400 centigrade. So you are going to keep a temperature some around little bit more than a 1400 centigrades. Once this temperature will be reached, the crucible is going to rotate in a one direction, and the silicon ingot cylinder will rotate in the other direction. Here it is a rotation is shown, let us it's anti-clockwise, then quartz crucible will rotate the clockwise. Okay, and once during the opposite rotation of this both the cylinder and crucible, there is a some pulling suction mechanism is also there, and therefore this molten silicon will slowly raise the level in the silicon cylinder, which is known as a silicon ingot cylinder, and the huge cylinder will be formed. Once it come to the solidified and so on, the removal process will be taken place. Once the cylinder gets at a room temperature, it is slide up, it is going to be sliced just like a bread is going to be sliced into a many slice of the bread's loaf. Same way here the cylinder is going to be sliced
cut it into the many slide, and this cutting is possibly taken place by either a laser tool nowadays, and earlier it was with the diamond cutting tool. It is observed that when it is going to be fabricated to Zochalski crystal technique, it is a complete cylinder, but thereafter one of the face or one of the side is going to be flattened off, and this is give us the indication about the direction of the easy axis of a crystal growth. On an average, it is observed for a silicon that it is a 1-1-1 direction. It is the said to be the very compatible for the growth fabrication of the IC. What is a 1-1-1 direction? If you do remember a little bit into the paper number PH3501, there is a different planes we have discussed. That is a Miller plane 1 0 0 0 1 0 or 0 0 1, something like this, and these planes are always pointed out by a direction which is perpendicular to passing through the plane, and that is called its direction. So this is the direction are highlighted over here, which is the orientation of a flat disc or the direction over here. Okay, so this in short, this flattened part is indicating the direction of the silicon crystal growth easy axis. Okay, now further after the flatten of this slide, this will be going to be gaze into so many logical separation of this area of an entire cylinder, and this meaning the perfect square except the edges where it is not the perfect square, which are going to be a waste, but otherwise the pure square ICs or pure square chips are going to be used for the further development of the fabrications. And on an average, it is observed that some around 8,000 chip is about to be fabricated if the diameter is of the silicon cylinder is of 10 centimeter. On an average, it is observed that this diameter is about 10 to 15 centimeter. So if I will pick up the 10 centimeter diameter and one wafer is capable to develop the 8,000, yes, it is also interested to not a 1 point. Now which kind of the 8,000, because IC is denoted by that density of the component, and we have seen in the previous lecture there are varieties of the categories of the IC on a basis of their density of a component. So if the components are less than 300 gates or lying between 30 to 300 gates, then they are known as a SSI. So, or it is less than 100 transistors. So this is the scaling of a 8,000 is for the SSI. Okay, so on an average 10 wafer could be taken at a time for the furnace, and well, it is also depend on the capacity of the furnace too. But if it's a 8,000 per wafer and there is a 10 wafers at a time, so roughly 80,000 ICs could be developed in a one batch, and this is a root cause why ICs are so cheap and why they are sell in a market with a very low budget or low rate. So this could be the one of the reason. The unlike situation, this data is pretty old, maybe at least a decade old, because that is given in the some books, but nowadays the figure is quite improved. But they said that because of the very high temperature and so many processes and some around 100 hours a job on a one wafer or a one batch of a wafers, and therefore there is a many possibilities that 50% or more than 50% ICs are not up to the mark. Now question arises, what it mean by up to the mark? Up to the mark, that means the desired input and output should have the accuracy of 97% or above. Then only market is considered or marked as a perfect IC, otherwise it is considered to be the waste. And this statistics gives us the idea that final yield, that is a sellable item in a market, is some around 20%. Well, I am repeating again,
This data is almost a decade old, but nowadays some of the scientists, I got the input from the scientists that nowadays the improvement factor is reached to more than 50%. So it is a tremendous development in the techniques and methodology. This cylinder is going to be slides in the range of some around, when they are going to slide it for making a wafer preparation, this is some around the thickness of the each wafer, that is the height of the wafer is some around 23 to 40 mil. This is a new unit we are learning in this. As I told last time also, 1 mil that is thousandth part of each, and thousandth part of each, that means 1 each divided by 1000, and in an average 1 inch is not a common unit, and therefore 1 inch, if I will convert into the centimeter, then it is a 2.54 centimeter divided by 1000, and therefore it is roughly 25 micron. Anyway, so this would be the information is given to you, and thereafter it is a phrase is written over here that it is a mirror polish. Now why mirror polish is needed? Because when you are going to grow a component, there is a possibility that if the slice which are going to cut it from a cylinder, or the wafers which are going to cut it from a cylinder, which are very uneven, because this cylinder is heated up to the 1400 centigrade, so it got very brittle. So in spite of cutting a laser, their side is not very smooth, and therefore if it is not smooth, then naturally the growing component having a different size of layers, well, it is in the variation in nanometers, but that nanometers make an impact of a variation of the accuracy of the IC, and therefore to overrule this doubt, it is always advised to do a mirror polish before going to use the wafer. So 23 to 40 mil thickness of slide is, after doing a mirror polish, is become somewhat 16 to 32 mils. Let me remind you again, 1 mil is roughly 25 micron, and this is a very small thickness of the IC. These are the very few important points which are I am making here, and this is a silicon wafer preparation. Then these are the 5 techniques are there, and one is a crystal growth and doping, then ingot trimming and grinding, then ingot slicing, then wafer polishing and etching, and thereafter the wafer cleaning. So these are the 5 techniques are going to be part of this processes. So you can understand now the each processes having also sub processes. So in beginning of this slide I told the each wafer preparation or each process is having a certain another depending processes, and therefore to fabricate a one wafer or a one batch of IC, you need to do a almost 100-hour job on this wafers, and it's a very long processes, and therefore also one of the reason that yields are always comparatively less. So this could be your one of your vivas or the questions, that what are the subtopics of a silicon wafers. Then it is a crystal growth and doping. That means अगर आपको P टाइप का मटेरियल बनाना है, N टाइप का मटेरियल बनाना है, so in this crucible you have to add your doping material, and therefore your growth of your crystal is according to that. Then the ingot, that means the cylinder what you have developed over here, so it's a ingot. So ingot trimming and grinding, so that means इसको ट्रिम करो, साइड की सरफेस सॉरी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसको स्मूथ करो और परफेक्ट सिलेंडर बना दो और उसको ओरिएंटेशन फ्लैटन अप करो. So that is the ingot trimming and the grinding.
देन इंगोट स्लाइसिंग। तो इसकी अब स्लाइस करेंगे, कितनी स्लाइस होगी 23 to 40 मिल्स की। उसके बाद वेफर पॉलिशिंग एंड ईचिंग, मैंने आपको बताया कि मिरर पॉलिश ज़रूरी है। मिरर पॉलिश करने में थोड़ी उसकी साइज़ कम हो जाएगी, थिकनेस कम हो जाएगी। 23 वाला 16 पे आके अटकेगा, 40 वाला 32 पे अटकेगा, तो रफली 8 से 10 मील ग्राइंडिंग में जाएगा। ओके, एंड देयर फोर अ वेफर क्लीनिंग, दैट मीन्स मे बी some dusting and this all will be going to be removable by a chemical wash or the hot water washes. So in nutshell, silicon wafer is another silicon wafer preparation is also a club of another 4 to 5 processes, and finally we do have the just wafer as a outcome, and their epitaxial growth, oxidation, photolithography, diffusion and so on is going to be continued till isolation technique, and thereafter the metallization package and the assembly processing and the packaging. Let's go to the next processes, and that is epitaxial growth. So second processes. So second process is said that epitaxial growth. The epitaxial growth is a word came from the Greek, and the mean of AP, that is the first three part of epitaxial, so that is EPI. So AP, that means upon, on top of something, upon, and taxi, that is the second four letter TAXI, and Latin word says it is a taxi. So it is the Latin word says that it is coming from the word tenon, and tenon, that means it is a very well arranged. So on top, very well arranged, on upon something, very well arranged, so very nicely organized on a certain surface, on top of the surface, and that's how the epitaxy or the epitaxial growth process name came. So let's go ahead in the detail of it. So in this processes, we are basically arranging the atom in a single crystal from upon the substrate, and we have a wafer, so wafer is considered to be the substrate. So on this substrate we are going to fabricate it, the well organized different components, and for this components we need a very uniform layer, and that is we required a very nice growth of a one layer, and this layer is referred as a epitaxial layer, and we are making the growth of it, so the name has given epitaxial growth. Now how we will going to do it? We will be taking the silicon wafer in a hydrogen reduction. So generally we having a silicon chloride, tetrachloride, with keeping the hydrogen, keep that wafers in a that entire wafers are going to be kept with the this two combination, that is a silicon tetrachloride and the hydrogen gas, and keep temperature is about to be a 1200 centigrade. So silicon will be released, and this silicon will is going to be deposited on the your wafer. At the same time, while you are keeping the reduction process of the silicon tetrachloride, and to achieve the silicon, mostly the epitaxial layers are fabricated with the specific impurity. माने पहले आपके पास सिलिकॉन वेफर तो बन के आ गई थी, अब उसके ऊपर जो एक पतला सा लेयर आप लगा रहे हो वो होगा आपका एन टाइप लेयर या तो पी टाइप लेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेफर होती है वो कुछ ना कुछ तो डोपिंग उसमें भी करना पड़ता है, बट लेट अस कीप द थिंग वेरी क्लियर। द सिलिकॉन क्रिस्टल जो क्रूसिबल में से इंगट और इनगॉट जो बन रहा है, सिलिकॉन का इनगॉट, वो इनगॉट माने वो सिलेंडर, वो बहुत ही लाइटली पी टाइप डॉप मटेरियल होता है, माने बहुत ही कम इम्प्यूरिटी आप क्रूसिबल में डालोगे टू कन्वर्ट द एंटायर सिलिकॉन इनटू वेरी 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 लाइटली डॉप पी टाइप मटेरियल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेरी वेरी लाइटली डॉप, बट नाउ आई वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट टू क्रिएट अ ग्रोथ ऑफ अ वन लेयर on this wafer, either a p type and or a
n type as per my need of my component, and therefore here it is. So mostly the epitaxial layer is very much specific with the impurity. अब we are knowing that कि हमारे पास दो टाइप की impurity है, p टाइप माने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एंड एन टाइप लेयर बनाने के लिए आपको पेंटावेलेंट माने 5 वैलेंसी वाला इम्प्योरिटी यूज़ करना पड़ेगा. एंड वेरी वेल नोन, यू आर नोइंग दैट इज़ अ phosphorus. So here we will be using a phosphorus not as a phosphorus raw material, but it would be in the gaseous formation. So that would be the phosphine gas, which is referred as a PH3. Okay, and for a p type we will be using a widely used impurity in the fabrication industries, that is a biboron hexahydrate, and that is B2H6, and this both impurity will enable us to having either p type or a n type layers, which is known as a epitaxial growth. This is one name of a scientist. The Kramer made up of a quartz tube and RF induction coil, and this is a quartz tube or the RF induction coil is a unit. So I was seeking a word. It is a unit, or rather as it is written, it's a quartz tube, so it's basically a furnace. It is also known as a tabular furnace, and this furnace could be a wire wound furnace, or sometime it is also the wire wound, so it is known as a induction coil furnace. आपने सुना होगा कि इंडक्शन स्टव भी मार्केट में आ रहा है. सो देर इज़ अ हैवी ड्यूटी कोयल इज़ देयर एंड यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर. प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन स्टव जैसे मार्केट में बिक रहा है, शायद आप लोगों ने सुना है. अगर नहीं सुना है तो जस्ट राइट इट आउट, इंडक्शन स्टव, सो यू हैविंग एन आइडिया. या तो सिंपलेस्ट थिंग, हमारे घर में जो आयरन है जो प्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, सो देर इज़ अ सम इंडक्शन कोयल विच कंज्यूम्स द करंट एंड द प्लेट इज़ गोइंग टू बी हीटेड अप. तो बेसिकली हमें क्या करना है, 1200 डिग्री तक फिर से वापस जाना है. तो कैसे करेंगे, तो इधर वी शुड हैविंग अ फर्नेस which is a quartz tubular furnace, or it is a induction furnace. Okay, so this is epitaxial growth is going to be taken place into a quartz tubular furnace or a induction coil. और कैसे करेंगे, with the silicon tetrachloride and the hydrogen से reduction करके करेंगे. और हमें प्री डिफाइन करना है कि एन टाइप चाहिए एपिटेक्शियल लेयर या तो पी टाइप चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू ऑल्सो ऐड द डोपिंग इम्प्योरिटी. तो हमारे दिमाग में 3 कंसेप्ट क्लियर हुए कि एपिटेक्शियल ग्रोथ के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए. एक तो वेफर एज ए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर वेफर को हम टेबुलर फर्नेस में या तो इंडक्शन कोयल वाले हीटिंग डिवाइसेस में अंदर रखेंगे, और अंदर रखने के साथ ही सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन का रिडक्शन कराएंगे. तो सिलिकॉन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लेयर्स जो सेपरेट हो रहे हैं, दैट वुड बी डिपॉजिटेड ऑन अ वेफर. एट द सेम टाइम वी विल बी हैविंग अ गैसियस एनवायरनमेंट ऑफ ईदर पी टाइप pentavalent material, that is a n type, and trivalent material for a fabrication of a p type layer. So all this 4 processes in a way we will be going to do parallel. The wafer is placed in the graphite board. तो वेफर कहाँ पे रखना है, उसके लिए एक स्पेशल कैसल माने एक स्पेशल सेटअप होता है, उसको ग्रेफाइट बोर्ड बोलते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट का मेल्टिंग टेम्परेचर 2000 डिग्री है, roughly 1800 to 1900. So we can use such materials which is having the very high melting point, so we will be using that. The last point which I mentioned over here, the various gases are required to grow the epitaxial layers. So impurity doping के लिए we will be not using the physical impurity material, but we will be using the gaseous formation, so ताकि हमें आराम से इम्प्योरिटी है वो यूनिफॉर्मली रिएक्ट करती हुई दिखाई दे. टेबुलर फर्नेस की एक डायग्राम बुक में दी गई है.
जो वैसे तो ऐसी ही दिखती है और उसके इनलेट में एक बैंड शेप का सेटअप होता है और यहाँ पे देखो बहुत सारी नोज़ल है और नोज़ल से आप अलग अलग सिलेंडर कनेक्ट करके बैठे हैं। तो एक नोज़ल में आपने नाइट्रोजन का सिलेंडर लगाया, दूसरी नोज़ल में हाइड्रोजन का लगाया, तीसरे सिलेंडर में हाइड्रोजन और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का कॉम्बिनेशंस लगाए, तो और चौथे में हाइड्रोजन और फॉस्फिन रखा है, पाँचवें में हाइड्रोजन और बाइबोरोन हेक्साहाइड्रेट रखा है और तीसरे में HCl रखा है। सो द वे विल द रिक्वायर्ड यू आर गोइंग टू डू इट। अब इसके जो ये जो सिलेंडर है वो टेबुलर फर्नेस है आपकी, ओके। अब इसका इसका इनर सेटअप कैसा होता है, तो ये एक सर्कल करके हाईलाइट किया है कि अंदर ऐसा कुछ है। तो ये टेब्यूलर फर्नेस के अंदर यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर का पोर्शन और ये भी सिलेंडर का पोर्शन कंटिन्यूस है। दिस एनसर्कल्ड वन दैट इज समथिंग यू आर मैग्नीफाइंग एंड allowed to see what is inside the cylinder, okay, and therefore in what is inside, तो inside there is a induction coil होगा। ये जो काली काली आपको डार्क लाइन दिख रही है, तो ऐसे सर्कुलरली सिलेंडर के अंदर कोयल रखी है और कोयल के केज के बीच में कोयल के केज के बीच में आप एक ग्रेफाइट की बोर्ड पे बहुत सारी वेफर्स रख दोगे। कौन सी वेफर्स? जो पहले प्रोसेस में वेफर प्रिपरेशन में जो आपने बोट बनाई थी, राइट, वेफर बनाई थी, सिलिकॉन वेफर जो एक साइड से फ्लैट हुई थी, वो सब वेफर्स यहाँ पे जो यहाँ के बिस्किट की तरह आपको दिख रही है। सो दिस ऑल आर द वेफर्स। सो रफली 10 to 15 biscuits or the silicon wafers you can keep it at a same time and you are able to do the process. अगर आपको एपिटेक्सियल लेयर ग्रो करना है तो पहले आप H2 और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वाला नोज़ल ऑन करेंगे, यहाँ से गैस जाने देंगे। एट अ सेम टाइम पेंटावेलेंट चाहिए तो फॉस्फिन गैस भी जाने देंगे। तो वाल नंबर 3 और वाल नंबर 4 में ओपन अप करूँगा। अब जितना मैं प्रेशर से ये डालूँगा उतने प्रेशर से यहाँ पे रिएक्शन होगा। That means to control the thickness of a N-type material layer on a wafer or the P-type layer on a wafer, फिर से बोल रहा हूँ, एपिटेक्सियल लेयर का ग्रोथ जो हम वेफर पे डेवलप कर रहे हैं, सो दैट ग्रोथ and the thickness of the layer is do depend that what is the pressure and at what rate you are allowed to pass the impurity as well as the raw material for the layer, that is a silicon tetrachloride and hydrogen reduction agent। ये भी इसका एक रेट, फ्लो रेट डिसाइड करना है और pH 3 या तो बाइबोरॉन फॉस्फेट का हाइड्रेट हेक्साहाइड्रेट का भी आपको फ्लो सेट करना है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इम्प्योरिटी, rate of flow of your basic material and the temperature and the pressure of the furnace will decide the thickness of the layer which are going to grow on a wafer, that is the epitaxial layer। and one and very major and very important point is the time। so कुल मिला के 5 पैरामीटर्स आप पे डिपेंड करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे मेजर पहले बोल लेते हैं। सो टाइम इज़ द इम्पोर्टेंट, कितनी लंबे टाइम तक आप रिएक्शन होने दे रहे हैं। सो दैट डू डिसाइड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ योर एपिटेक्सियल लेयर। फिर आपको याद करना है कि कितनी अमाउंट में डोपिंग लेयर डाल रहे हो और कितनी अमाउंट में बेसिक प्रिकर्सर माने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड डाल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट। तीसरा, उसका फ्लो रेट इन टेबुलर फर्नेस कितना है, तो फ्लो रेट ऑफ अ प्रिकर्सर एंड द इम्प्योरिटी, दैट इज़ ऑल्सो डू डिपेंड। चौथा, कौन से प्रेशर से आप अंदर डाल रहे हो वो भी डिपेंड है। और पांचवा, टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। सो कभी कभी टेम्परेचर ज़्यादा रखने से रिएक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाती है, प्रोसेस के दरमियान प्रेशर ज़्यादा होने से रिएक्शन रेट विल बी बिकम वेरी प्रोमिनेंटली, सो वो भी ग्रोथ पे डिपेंड करता है। लंबे समय तक रिएक्शन होने दो तो भी ग्रोथ लेयर बड़ा आता है। सो दिस ऑल आर द टेक्निक। तो ये सब जो 5 या 6 पैरामीटर्स है वो उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। उसको नाम बोलते हैं ऑप्टिमाइज़, माने मैक्सिमम आउटपुट मिले ऐसा कुछ पैरामीटर्स के मुझे 5 मिनट तक ग्रोथ चालू रखना है, 1 पाउंड पर
आवर के प्रेशर से मैं फ्लो रेट रखूँगा. सो दिस आर द वे यू हैव टू डिसाइडेड कि मैं 1200 सेंटीग्रेड की जगह 1220 सेंटीग्रेड रख रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ रेट फास्ट हो रहा है. इम्प्योरिटी में 1% की जगह 0.9 रखूँ और प्रेशर में थोड़ा बढ़ा दूँ हाफ बार तक तो मेरा ग्रोथ रेट ज़्यादा आ रहा है, मेरी इम्प्योरिटी भी कम होगी. सो दैट वे यू कैन ऑप्टिमाइज द पॉइंट्स. ओके, सो हाउ इट लुक्स लाइक. तो दिस इज़ योर सबस्ट्रेट. माने ये जो नीचे मैंने लिखा है 10 ओम सेंटीमीटर या तो पी टाइप सबस्ट्रेट, तो दिस पिंक वन लेयर इज़ नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ योर सबस्ट्रेट. माने वेफर, जो वेफर सबसे सिलिकॉन इंगोट आप बोलते हैं, तो सिलिकॉन इंगोट जो आपने बनाया था वही सिलिकॉन इंगोट दैट इज़ अ पी टाइप सबस्ट्रेट. मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन वेफर प्रिपरेशन में भी क्रूसिबल में वेरी लाइटली डॉप पी टाइप मटेरियल ऐड करना है. ओके, उसके ऊपर एन टाइप की एपिटेक्सियल लेयर अगर मैं बना रहा हूँ. सो व्हाट इज ऑन एन एवरेज द थिकनेस ऑफ द ऑन एन एवरेज इज 5 to 25 माइक्रोमीटर. माने 5 से लेके 25 माइक्रन तक आप ये थिक बनाओगे. हाउ इट इज़ गोइंग टू बी थिकनेस विल बी वेरिंग. सो अभी हमने 5 जो पैरामीटर बनाए वो 5 पैरामीटर पे डिपेंड करता है. कौन से फिर से रिपीट कर रहा हूँ. टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो रेट एंड द flow rate of the both the precursor and the flow rate of a impurity. Okay, so this will decide the thickness of the layer. Oxidation layer. The next process is a oxidation layer. The silicon wafer are stacked in a quartz board or maybe a graphite board. Is depend what is the temperature you are playing around. क्योंकि क्वार्ट्स का टेम्परेचर है सम अराउंड 1400 तक 1500 तक. तो अगर 1100-1200 तक जाना है तो क्वार्ट्स बोट विल डू. लेकिन उससे ऊपर जाना है तो आपको ग्रेफाइट का बोट या तो ग्रेफाइट का क्रूसिबल यूज़ करना चाहिए. Okay, so now this is a silicon wafer are raised to a high temperature some around 950 to 1100 and same time exposed to the gas of oxygen or hydrogen using a H2O surrounded the boat, and this will give you the reaction because actually hydrogen which is part of the water molecule which is using as a reduction reagent. So उसको हाइड्रोक्सिजेशन बोलते हैं. And hydroxylation is done by either oxidation basically, but through hydroxylation or directly oxidation. स्टेटिस्टिकली वो देखा जाता है कि अगर डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करो तो थोड़ा क्रिस्टल ब्रिटल हो जाता है, तो नेक्स्ट ग्रोथ लेयर में थोड़ी दिक्कत आती है. सो दिस इज़ द रिसर्च लेवल डेवलपमेंट कि H2O से अगर आप रिडक्शन करके ऑक्सीडेशन डेवलप करो तो the silicon oxidation will be much better. Okay, so this is the oxidation processes is also called the thermal oxidation because you are basically play around with the temperature. and oxidation layer की अगर thickness में की बात करूँ तो सम अराउंड इट वुड बी 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोन तक. सो बहुत हल्की सी एक ऑक्सीडाइज्ड लेयर आ रही है. सो बेसिकली वाई इट इज़ नीडेड बिकॉज इट्स अ प्रोटेक्टिंग लेयर. So silicon layer is extremely hard protective layer. Silicon oxide is very hard and protective layer and stand against the contamination and remain unaffected for the almost all reagent except हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. माने अगर देखा जाए तो सिलिकॉन ऑक्साइड को अगर निकालना है तो आपको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ही निकालना पड़ेगा. अदरवाइज इट इज़ अ दैट गुड प्रोटेक्टिव लेयर. सो आपकी वेफर को कुछ भी कंटेमिनेशन नहीं होने देगा. और डू बिलीव फ्रेंड्स, कंटेमिनेशन इज़ अ बिग हेल
ऑफ अ जॉब ड्यूरिंग द एंटायर फैब्रिकेशन। थोड़ा भी कंटेमिनेटेड आपकी बैच हो गई तो शायद कभी कभी तो ये होता है कि पूरी बैच वेस्ट हो जाती है। मैंने शुरू में बताया था कि फाइनल यील्ड 10 साल पूरा पहले तो 20% ही था, अब जाके सुधर के वो 50% तक पहुंच गए। लेकिन माइनस पॉइंट ये होता है कि अगर एक गलती से एक एटम भी इम्प्यूरिटी का बढ़ गया सो आपकी पूरी बैच ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाएगी। सो कंटेमिनेशन प्रोटेक्शन इज़ वेरी बेसिक एंड हाई नीड इज highly needed, and that is why a silicon layer oxidation is very important for us। कैसे दिखता है तो बुक में से ही फिगर ली है, तो फिर से बताऊं, वेफर का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो पी टाइप सबस्ट्रेट है, वो सिलिकॉन इनगॉट जो था उसमें लाइटली डॉप पी टाइप डालने से ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो आपको मैंने रेक्टेंगुलर ही बताया। उसके ऊपर एपिटेक्शियल लेयर का एक ग्रोथ आपने बनाया, वो कितना था अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इट इज़ सम अराउंड 2 से लेके 25 माइक्रोन तक, या तो 5 से लेके 25 माइक्रोन तक की थिकनेस है। द रेड वन इज़ अ सिलिकॉन ऑक्साइड, अभी आपने बताया कि वेरी थीन वन, तो उसकी थिकनेस 0.02 से लेके 2 माइक्रोन तक। ज़्यादा करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना लेयर भी काफ़ी प्रोटेक्टिव पुरवार हुआ है। इट इज़ अ वेरी वेल proven that the silicon oxide is giving a 100% contamination free zone for the entire layer. So this is the whole discussion for this one. Thank you so much for paying attention. Friends, please keep reading the material because this is a I need to ask so many corner questions in your objective setup of your online exam, and I need a promise from your end that you keep read the material because it's a very descriptive one, there is no mathematical derivation and so on, so I need to derive varieties of questions और उसके लिए आपको ये पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग